Namaskar. Hello, everybody. Good morning. I'm Dr. Mukesh Pareek, and in this video, I'll be talking about five important romantic prose writers. As you all know, that a few days back, I uploaded two videos on William Hazlitt and Charles Lamb. In the series of these romantic prose writers, I'm ready with the other important prose writers. First of all, in the series of romantic prose writers, the most important one is Charles Lamb, the second one is William Hazlitt, and the third one is Thomas D. Quincey. Friends, Thomas D. Quincey has carved a very important niche for himself as a romantic writer. And the most important work, which has already been asked many times in exam of NET and JRF, is his essay Confessions of an English Opium Eater. This work was published in 1821, and it is an autobiographical account of Thomas D. Quincey. Thomas D. Quincey, like S.T. Coleridge, was in the habit of consuming a kind of, a mixture of opium plus alcohol. This mixture of opium and alcohol is actually called laudanum. And this question has already appeared in the exam, so you should be aware about that. Now, some students may ask me, like, what is special if somebody is taking a dose of opium, and if he is happy with this kind of intoxication or this kind of high, then what is important for us as a writer? So I would like to inform them that actually, you all know that something happens when we are in some high state of intoxication. In that state, the concept of time and space, they change, and the things which look to us, their dimensions are changed, and the perception and the way of looking of the person is also changed. Number one. Number two, one should also be aware about the financial conditions of Thomas D. Quincey, that he passed through very straitened circumstances in his life, and because of that, he wanted some kind of relief in his life, and plus he was also suffering from some physical maladies. So doctor suggested him to consume laudanum. Now, something of a thing of some personal nature has become a universal thing, as per literature is concerned. That is important for us. This essay was published in London magazine, and as an essay form, and in the book form it was released in 1822. As I told you, that this essay talks about his special pleasures, when he used to consume this, and he used to attend operas, he used to wander in the streets of London, and then he used to tell us by writing, like, what he was feeling. The essay is divided into mainly into two parts. Then comes the very important question, which has already been asked in exam, about Thomas D. Quincey's another essay which he wrote on Alexander Pope. But in that essay, the writer has given us two phrases which have become permanent today, that is the literature of knowledge and the literature of power. Now, I would like to dwell upon these two aspects, that what is the difference between the literature of knowledge and literature of power. Literature of knowledge means simply a kind of literature which we read. We simply feel that we are enlightened, or say we are knowledgeable, we are informed. But when we read literature of power, then we come to know that these things, for example, the writings of Milton, the writings of Alexander Pope, the writings of Shakespeare, the writer has named all these writers. He says that when we read them, we come to know about the actual truth of the human existence. So this actual existence of human existence, when we come to know about, that writer has said that somewhere it talks about the actual and metaphysical truth of the life of a human being. So that kind of literature is permanent, and to him the writer has called literature of power. And any kind of common literature, for example, literature written in a cookery book, a literature written in self-help books,
literature. Literature means the writer has in this essay, first of all, defined like what literature is. Literature does not mean anything which is written or say something which has been published. Literature means something which has some permanent value, which can improve the truth, the level of truth or the understanding level of truth of human being. That the writer has termed the literature of power. So that you can understand now, like why this question has been asked in our exam. I would also like to inform you that literature of knowledge and literature of power, these two terms, Thomas de Quincey, the prose writer of Romantic Age, he used these two terms in an essay he wrote on Alexander Pope, and this essay was published in the North British Review in August 1848. Now, let me talk about another important essay, that is on the knocking at the gate in Macbeth. Friends, you all know that Shakespeare wrote a tragedy. Its name is Macbeth, and in that second act, there comes a scene of the murder of King Duncan by Macbeth and his wife, Lady Macbeth. Just after the murder, there comes the scene of knocking at the gate. Then the writer was a child, Thomas de Quincey. When he was a child, there must have been this play in their syllabus. He is subjectively telling us in this essay that I could never understand like what is the significance or the objective correlative between the knocking and then why the writer has introduced, Shakespeare has introduced that knocking. So this essay is all about all these simple expressions of writer, but it has a literary value. And the essay is very brief in nature. It is only 2,000 words. You can read this essay. You can go to internet, and there is a Romantic Writers Archive present, and you can just go, and there is no need to ask me for PDF. It's already available. And this essay was also published in the London Magazine. Friends, whenever I'm talking about all these writers and their published works, particularly for the prose writers, you should be aware about when the work was published and in which form it was published, in which magazine. These are also important questions they can ask you. Apart from that, if the essay is very small in nature, then I think you should go and read the essay. Then comes the another important essay, that is on murder considered as one of the fine arts. In the time of Thomas de Quincey, there was a highway Ratcliffe kind of person. His name was John Williams. It is said that he was allegedly he allegedly committed many murders in 1811. The writer has taken that incident and has written an essay that murdering someone is also a kind of fine arts. So you can understand the kind of comedy present in this essay, the black humor the writer has tried to evoke. And this essay was also published in Blackwood's magazine. And you will feel quite surprised that G.K. Chesterton kind of prose writer and Wyndham Lewis and George Orwell, these writers have highly praised this essay. Sometimes if you are not in the habit of reading original writers, though I'm undermining those students, because most of the students, when they do their post-graduation, they mostly read the original texts. If you read original text of Thomas de Quincey, friends, you will be very happy, because you will find that there is a slight difference between the way Hazlitt writes and the way Charles Lamb writes. And you will be happy to read this kind of prose the writer is famous for. This prose is called prose poetry. Prose poetry means to say the writer is writing prose, but he's writing that prose in such a manner that it looks like he's writing poetry by using all the beautiful languages with the Latin phrases, with beautiful metaphors, and somewhere writing about his personal life. The writer I'm talking about, and all the other writers in this video I'll be talking about, are also called semi-romantics. They are called semi-romantics in the sense because they do not fulfill all the qualities of the romantic writers which Charles Lamb and William Hazlitt fulfill. And another important essay is The English Mail Coach. This is also written by Thomas de Quincey. It is written in 3 parts, and it also appeared in 1849 in Blackwood's Edinburgh magazine. I reread the name of the essay, The English Mail Coach. In this essay, he's talking about the contribution of the mail coaches, the Tonga.
you understand, जिसको हम हिंदी में बग्गी बोलते हैं, is talking about that unimportant thing which which seems to be unimportant, but actually it is very important. Male coaches mean to say the as you know that today we are living in an age where information revolution is there, and immediately look at, like, I'm sitting here in this quarantine period and I'm reaching you people, but just imagine 200 years ago when messages used to reach through letters, and male coaches were famous. Many horses used to drag 4 or 5 coaches all together, and they were very they used to run in very high speed. So writer has talked about those people who used to drag those horses, जिनको हम कोचवान बोलते हैं. It's a very good word, because coach is an English word and van has been taken from Hindi. So again, a kind of mixture or English, we can say. So in this essay, the English male coach, they can simply ask you, giving the options. I don't suggest like you should read this essay, but after that, I would like to talk about something. Another important essay of Thomas de Quincey's Suspiria de Profundis. It is a Latin name, Suspiria de Profundis. इसका मतलब लैटिन में होता है sighs, SIGH. Sighs मतलब sighs from the depth. It is also a best known work of Thomas de Quincey. This is important in the sense that in this writing, the writer has used impassioned prose, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले prose poetry बोला था. So you all can understand that what is the importance of this writer in the history of English literature, that he has given us so many different essays, and you will also be pleasantly surprised that this writer was more famous than Charles Lamb and other writers, and he had an important place in the views of the romantic writers. Now I'm moving towards another important writer, that is Walter Savage Landor. You may write down the name, Walter Savage, 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 Landor, Landor. This writer you may not have heard more about, but this writer shows his presence here and there in question papers of NET and JRF. इसकी खास बात क्या है फ्रेंड्स? एक बात मैं और कहना चाहूंगा आप लोगों को कि when we read all these writers, you should also be aware that Hazlitt and Lamb, they were purely prose writers, but you are also aware, I have informed you, कि उन्होंने कविताएं भी लिखी है, उन्होंने ड्रामास भी लिखे हैं. जैसे हैजलिट है, मेरा वीडियो देखिए हैजलिट के ऊपर, उस पर मैंने बता रखा है कि that writer has a keen eye on painting, और he also was keen interested in the poetry, because वो पोइट्री लिखते नहीं थे लेकिन was able enough to understand the poetry of Shakespeare and all. Yeah. So वॉल्टर सेवेज लैंडर जब मैं बात करता हूं, तो वॉल्टर सेवेज लैंडर को आप अगर पढ़ोगे तो आपको वो एक तरह से एक पोएट नजर आएंगे. लेकिन एक्चुअल में मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जैसे मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है 10 एलिजाबेथन प्रोज राइटर्स, आप उस वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि अरे इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस नेट में आए हैं. क्योंकि शेक्सपियर और मार्लो और बेन जॉनसन के जमाने में जो राइटर प्रोज में लिख रहे हैं, भले वो ड्रामेटिस्ट हो, भले वो पोएट्स हो, तो उनके प्रोज राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के अंदर. सो मैं सोच समझ करके ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके अपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. वॉल्टर सेवेज लैंडर एक पोएट है, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर वर्क है जिसके लिए हम उनको याद करते हैं, और वो है इमेजिनरी कन्वर्सेशंस. उन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम है रोज एल्मर, AYLMER, रोज एल्मर. तो रोज एल्मर पे भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं इमेजिनरी कन्वर्सेशंस के ऊपर. अब ये इमेजिनरी कन्वर्सेशंस क्या है? एक्चुअल में कुछ हिस्टोरिकल, ही टुक सर्टेन हिस्टोरिकल पीपल फ्रॉम ग्रीस एंड रोम एंड कंपोज्ड सम इमेजिनरी कन्वर्सेशंस विद दीज राइटर्स, सो दैट वो जो रीड करने वाली पब्लिक है उनके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन गई. ये पब्लिश हुए थे 1824 से लेकर 1829 के बीच में. ये क्वेश्चन आ सकता है, और बट ये क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे आपसे कि इसमें देयर आर 6 यूनिट्स ऑफ दीज इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, बट वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि वो कौन कौन से लोग थे जिनके ऊपर इन्होंने लिखा है. सो वॉल्टर सेवेज लैंडर का इतना ही कंट्रीब्यूशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट अब आगे बढ़ते हैं हम. टॉमस लव पीकॉक. सबको मालूम है कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है, वो ये कि जब हम
when you see that Plato says that poets should be dragged out of a republic. तो एरिस्टोटल जो उनके शिष्य थे वो रिटॉर्ट करते हैं बाय राइटिंग पोएटिक्स कि पोइट्स तो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। इसी तरह से स्टीफन गॉसन जब स्कूल फॉर स्कैंडल लिखते हैं एलिजाबेथन एज में, तो फिलिप सिडनी उसको डिफेंड करते हैं कि नहीं, पोइट्स इंपॉर्टेंट लोग होते हैं और उनको वो हमारे सामने एक इमेजिनरी ट्रूथ के तौर पर हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं उनको उनको प्रकट करते हैं पोइट्री के थ्रू, और वो विजनरीज होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि देयर आर अदर राइटर्स। तो थर्ड सीन में आकर के यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि थॉमस लव जे पिकॉक का क्वेश्चन क्या बनता है। इन्होंने एक बार एक बुक लिखी जिसका नाम था द 4 एजेस ऑफ पोइट्री 1820 में, और इन्होंने, वो भी एक पोइट थे, और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड है। तो जैसे चार्ल्स लैम्ब ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी में के क्लर्क थे वो लंदन में, और इसी तरह से जो थॉमस लव पिकॉक है वो शैली के और बायरन के फ्रेंड थे। लेकिन उन्होंने एक दिन एक बुक लिखी जिसका नाम था द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, और दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन लिटरेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज पब्लिश्ड इन अ जर्नल एक्चुअली, लिटरेरी मिससेलेनी इन 1820। अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल बताऊंगा आपको कि इसमें ऐसा उन्होंने क्या लिखा कि जिसके रिटॉर्ट करते हुए पीबी शेली ने डिफेंस ऑफ पोइजी नाम का एक इंपॉर्टेंट वर्क लिखा जो उनके पोस्टमसली पब्लिश हुआ, मरने के बाद पब्लिश हुआ, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ, और वो एक इंपॉर्टेंट वर्क बन गया आज, जिसको बाकायदा पढ़ाया जाता है। तो वो बुक का नाम था द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, जो थॉमस लव पिकॉक ने लिखी थी। इस बुक में उन्होंने बात की है कि पोइट्री अब तक 4 एजेस में से गुजरी है। फर्स्ट एज का नाम लिया उन्होंने आयरन और बार्डिक एज। उस एज को उन्होंने कहा कि दैट वाज एन एज ऑफ इन्फेंसी ऑफ पोइट्री। उसमें उन्होंने कहा है कि पोएट्स वर द सोल डिपॉजिटरीज ऑफ ऑल द नॉलेज ऑफ देयर एज। ऐसा करके उन्होंने एक कहा कि भाई एक आयरन एज हुई है जिसको बार्डिक एज भी कहा। सेकंड उन्होंने कहा कि गोल्डन एज आई जिसको उन्होंने होमरिक एज कहा। In this he says that poetry achieved perfection by synthesizing the primitive vitality and power of iron age। तो होमर की जो एज थी उसको उन्होंने गोल्डन एज कहा। थर्ड उन्होंने कहा सिल्वर एज विच इज वर्जिलियन एज, मींस जब ग्रीक कल्चर खत्म हो गया और रोमन कल्चर स्टार्ट हो गया, तो he called it silver age because in this age he says that poetry was no longer supreme but derivative, consisting of good sense and learning conveyed in a labored and somewhat monotonous harmony of expression। तो सिल्वर एज की खास बात क्या बताई कि जो रोमन एज के कवि थे वो बहुत ज्यादा मेहनत करके लिखते थे, नेचुरल पोइट्री उनके अंदर से नहीं आती थी, वो डेरिवेटिव थी। जो कुछ ग्रीक लोगों ने लिख दिया वो उसको कॉपी कर रहे हैं, फिर भी वो अच्छा लिखते हैं, इसलिए उसको उन्होंने कहा कि सिल्वर एज है। बट अपनी एज के बारे में उन्होंने कहा कि नाउ वी आर लिविंग इन अ ब्रास एज, जिसको उन्होंने नॉनिक एज कहा, NONNIC, नॉनिक मतलब नथिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि द सेकंड चाइल्डहुड ऑफ पोइट्री। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आयरन एज में भी उन्होंने कहा कि इन्फेंसी में है पोइट्री, और अब भी ये कह रहे हैं कि ये तो एज जो है वो बिल्कुल एक सेकंड इन्फेंसी में चला गया। कविता बहुत खतरनाक तरीके से लो स्टेज में आ गई है, और सिविलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर ये नहीं बोली जानी चाहिए, ये सेमी बारबेरियन लेवल में आ गई है। मतलब कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर वाज ए राइटर एंड ये पूछ रहे हैं एक सज्जन मुझसे कि मैं सेकंड ग्रेड की कोचिंग करवाता हूँ, कि हाँ मैं करवाता हूँ, आप मुझसे अलग से कांटेक्ट कीजिएगा इसमें अभी वीडियो खत्म होने के बाद। हम फर्स्ट ग्रेड की भी कोचिंग करवाते हैं, सेकंड ग्रेड की भी। सॉरी आई वाज लाइव सो आई आंसर्ड समबडी। तो मैं बात कर रहा था फोर्थ एज की, ब्रास और नॉनिक एज, सेकंड चाइल्डहुड उन्होंने कहा है इसको, ओके। और he says that it's a pseudo archaic and self conscious, मतलब कि रोमांटिक एज के कवियों को इन्होंने नेगेटिव कहा है। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। वो कह सकते हैं कि थॉमस लव जे पिकॉक ने तारीफ की है कि अपने कंटेम्पररीज की, तो साफ पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी एज में रोमांटिक एज की कवियों को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, ये बाद के अंदर लोगों ने उनको पसंद करना स्टार्ट किया। एक और क्वेश्चन उठता है कि आखिर 4 एजेस ऑफ पोइट्री लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि जैसे आज है, आप आज ही समझ लीजिए, आपको पता है आज हम फिल्मी गाने सुनते हैं, हम कभी भी बाजार जाकर के कविता की कोई किताब उठा के नहीं लाते। बहुत पढ़े लिखे फैमिलीज में ऐसा होता है। मेरे पीछे आप इतनी बड़ी लाइब्रेरी देख रहे हो, व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑप्टेड एज अ करियर।
बट अगर आप कोई मुझसे भी पूछ ले कि डॉक्टर मुकेश पारिक क्या आप बहुत ज्यादा कविताओं की किताबें पढ़ते हो, तो यू विल बी सरप्राइज आई कैन एंजॉय पोइट्री, बट आई कांट स्पेंड माई एनर्जी एंड मनी इन बाइंग अ न्यू पोएट। इसका मतलब है हर एज में लगभग ऐसा रहता है। केवल एलिजाबेथन एज में ऐसा नहीं हुआ। उसमें क्या था कि लोगों का जो लिखने का स्टाइल था वो था बैलेड लिखने का स्टाइल, जो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता था, और शायद मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट कम रहे होंगे। तो ये सब समझने की चीजें होती हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया रोमांटिक एज में, तो लोगों का जो लेवल था वो धीरे धीरे, देखो हमेशा याद रखो, रोमांटिक एज या कोई भी एज होती है जिसमें कामकाज के साधन जब बढ़ जाते हैं और तो लोगों का लेजर कम हो जाता है, फ्री टाइम कम हो जाता है, तो ऐसे में वो कविताएं पढ़ना बिल्कुल छोड़ देते हैं, और उनको कहीं ना कहीं लिटरेचर ऑफ नॉलेज ज्यादा अट्रैक्ट करता है बजाय के लिटरेचर ऑफ पावर। अगर मैं आपसे कहूं कि बैठ करके मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ लो, तो नौकरी लगनी होगी तब तो आप पढ़ लोगे लेकिन अगर आपको ऐसे कहा जाए कि एंजॉय करने के लिए पढ़ो, या शेक्सपियर का कोई ड्रामा एंजॉय करने के लिए पढ़ो, तो आप कभी नहीं पढ़ोगे। तो इससे पता चलता है कि जो भी थिंकर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि पोइट्री का लेवल जो है वो काफी ऑब्वियसली डाउन आ जाता है। हमारी फिल्मों के गाने देखिए, गटकाइले मुझे अल्कोहल से, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूं यार, दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर फेमस एंड हिट। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो कविताओं का स्टैंडर्ड काफी लो हो चुका है। ऐसा का ऐसा रोमांटिक एज में हुआ, और मैं एग्री करता हूं कि 4 एजेस ऑफ पोइट्री एक अच्छी बुक है, लेकिन बात चल रही है कि आपके आसपास कैसा कल्चर्ड माहौल है। अगर आपके आसपास बहुत अच्छा माहौल है, तो आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे लोगों का माहौल है, तो दे कीप टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ शेरो शायरी, पोइट्री। तो ऐसे लोग दे कैन अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ पोइट्री। अगर आप टीचर बन गए पोइट्री के, आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपको खुद को 4 लाइन पोइट्री की याद नहीं होती है, तो आप समझ सकते हो कि आखिर थॉमस लव पिकॉक जो शैली के फ्रेंड थे, उन्होंने पोइट्स को क्रिटिसाइज करते हुए 1820 में द 4 एजेस ऑफ पोइट्री क्यों लिखी, जिसमें उन्होंने रोमांटिक एज को आयरन एज कहा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक। मैं 2-3 और ऐसे इसके नाम लेता हूं जो थॉमस लव पिकॉक ने लिखे हैं। दैट इज रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड, द एबे हाउस। ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट में ऑलरेडी, 1837 में पब्लिश हुआ। मेमोइर्स ऑफ शैली, आप समझ जाना, मेमोइर्स ऑफ शैली लिखा है तो ये शैली के फ्रेंड थे। ये बुक 1858 में छपी। शैली प्रीमेच्योर, उनकी डेथ हो गई थी डूबने से, पता है आपको, तो ये उनके फ्रेंड ने उसके ऊपर बाद में लिखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द लास्ट डेज ऑफ विंस्टर फॉरेस्ट, that was published in 1887, इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है। द लास्ट वन इज प्रोस्पेक्टस क्लासिकल एजुकेशन। तो ये थॉमस लव पिकॉक का जो मेन क्वेश्चन बनता है वो मैंने ज्यादा डिस्कस कर लिया। नाउ आई कम टू अनदर इंपॉर्टेंट राइटर, दैट इज जेम्स हेनरी ले हंट। इनको हम प्यार से शॉर्ट में ले हंट के नाम से पुकारते हैं, LEIGHHUNT, ले हंट। ले हंट वॉज अगेन अ काइंड ऑफ क्रिटिक, एन एसेइस्ट, a kind of poet also। हमें इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि this was the only poet who was famous for publishing different writers of romantic age। जैसे एक्चुअली में ये वीडियो मैं कल लाइव कर रहा था, लेकिन इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो ढंग से हो नहीं पाई। मैं उस वीडियो में एज इट इज ये बता रहा था कि आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कमला दास, फिर निस्से मजकील और प्रेमचंद के ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके लोगों तक पहुंचाना, पार्थ सारथी, सब बड़े बड़े राइटर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया। आप समझ सकते हो कि जैसे मैं एक कवि हूं, मैं लिखता हूं मान लो, तो ऑल ऑफ अ सडन मैं सब तक नहीं पहुंच सकता। तो जैसे पुरुषोत्तम लाल एक बहुत बड़ा नाम है हमारे इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश में, जिसपे नेट में क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। उन्होंने डिफरेंट सेट एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा है। अब पुरुषोत्तम लाल की जो इंपॉर्टेंस है कि ही इज कंसिडर्ड टू बी किंग मेकर, पोएट मेकर, लोगों तक पहुंचाने का काम किया। वही काम इंग्लिश कल्चर में ले हंट का है, दैट ही स्टार्टेड डिफरेंट मैगजीन्स लाइक एग्जामिनर है, और ऐसी मैगजीन्स उन्होंने स्टार्ट की जिसमें उन्होंने अपने काफी सारे फ्रेंड्स को पब्लिश किया। उन्होंने हैजलिट को पब्लिश किया, उन्होंने चार्ल्स लैम्ब को पब्लिश किया, उन्होंने जॉन कीट्स को, इन सबको पब्लिश किया, उन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग को पब्लिश किया। लोगों के सामने टेनिसन को लाने का जो श्रेय है वो ले हंट का है। तो आई हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू दिस राइटर इन दिस वीडियो बिकॉज you can understand that as a journal expounding figure we remember Le Hunt। as such उनका कोई वर्क फेमस नहीं है, बट आपको एग्जाम में ये सब नजर आएगा। और ये भी कहा जाता है कि जब ले हंट को एक पेंटर ने बिल्कुल फेमस कर दिया कि जब उनकी शैली की डेथ हुई थी, तो वो अपनी नाव में थे, उस नाव का नाम था डॉन जुआन, नाव का नाम था। अपने फ्रेंड बायरन के जो मेजर वर्क है उसके ऊपर उनकी नाव का नाम था। वो डूब गए, उनकी बॉडी को जब
कलेक्ट किया गया, तो जो भी अवशेष मिले थे उनको किनारे पे ही जलाया गया। तो वैसे वो दफनाते हैं, पर वो एक शायद कपड़ों वगैरह का संस्कार किया गया था। तो उस वक्त ले हंट वाज द इंस्ट्रूमेंटल फिगर इन परफॉर्मिंग ऑल दीज टास्क्स। तो कहते हैं कि ले हंट का नाम शैली से इसलिए जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूँ वीडियो खत्म होने से पहले। और मैंने कई लोगों का गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं ये वीडियो लाइव की तौर पे देख रहा हूँ, लेकिन इसको मैं अपलोड करूंगा। तो फर्स्ट राइटर वाज इन दिस सीरीज वाज टॉमस डी क्विंसी, जिनके वर्क्स थे कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821 में पब्लिश हुआ। मैंने उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताया कि एक तो था उनका अलेक्जेंडर पोप पे लिखा ऐसे, जिसमें 2 टर्म्स फेमस हो गई हैं, वो है लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर, जो मैंने एक्सप्लेन की। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट ऐसे उनका था ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। उसके बाद उनका ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, फिर इंग्लिश मेल कोच, फिर सस्पीरिया डी प्रोफंडिस, ये एसेस थे टॉमस डी क्विंसी के। फिर मैंने नाम लिया वॉल्टर सैवेज लैंडर। आप 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे मैं क्लास में अगर आपको इन्फॉर्म करूं, तो अगर आप इसको सुनते हो देखने के साथ साथ ढंग से, तो आपको याद हो जाएगा। वॉल्टर सैवेज लैंडर को मैंने बताया कि उन्होंने एक रोज एल्मिर नाम से पोएम लिखी थी, उसके लिए ये कम फेमस है, लेकिन इमेजिनरी कन्वर्सेशंस के लिए फेमस है, जो 1824 से 1829 तक पब्लिश हुआ। 6 यूनिट्स में बुक है, और उसमें ग्रीक और रोमन कल्चर के इंपॉर्टेंट फिगर्स को लेकर के उन्होंने डिस्कशंस किए। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट नेम टॉमस लव पीकॉक का, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, 4 एजेस ऑफ पोइट्री 1820 में पब्लिश हुई। और लिटरेरी जर्नल का नाम था लिटरेरी मिससेलेनी, जिसमें ये पब्लिश हुआ। और इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है रोमांटिक राइटर्स को, और पहली एज को इन्होंने आयरन एज कहा, फिर गोल्डन एज कहा, फिर सिल्वर एज कहा, फिर आयरन एज कहा। और आयरन एज को इन्होंने द सेकंड इन चाइल्डहुड ऑफ पोइट्री कहा है, और सेमी बारबेरियन बताया है रोमांटिक एज को। और लास्ट में मैंने नाम लिया ले हंट का। तो ये हो गया आपका रिकैप्चुलेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ ही देर में मैं फिर से हाजिर होऊंगा। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कह रखा है कि मैं लाइव आऊंगा। मैं पहले लाइव इसलिए आ गया क्योंकि मुझे ये वीडियो अपलोड करना था, और ये किसी वजह से हो नहीं पाया था। तो मुझे लगा कि बहुत सारे और भी बच्चे मुझे देख लेंगे तो उनका भला हो जाएगा। और मैं अभी लाइव आने वाला हूँ एसटी कॉलेज डिस्कस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।